Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, today's topic is about galaxies. What is a galaxy? This is 12.2.3 topic of chapter number 12, which was about investigating space. This lecture is 25th of the series. What is a galaxy? A galaxy को उर्दू में हम कहते हैं कहकशां. A galaxy is a very large group of stars, nebula, gases, dust and planets. Galaxy क्या होती है? Basically gases होती हैं, lots and lots of gases, और उसमें dust होता है, and then of course it has stars in it, planets in it, nebula in it. Nebula क्या होती है? Nebula is also a cloud of gases and dust. Nebula भी पूरी. So a galaxy is a very large group of stars, यानी बेपनाह उसमें stars होते हैं. Nebula होता है, वो nebula क्या होता है? Is a cloud of gases and dust. फिर gases होती हैं, इसमें dust होता है और planets होते हैं. A galaxy may contain billions of stars. Galaxy के अंदर कहकशां में billions of stars हो सकते, कई अरब तारे हो सकते हैं उसमें. It contains billions of stars. So galaxy, what is a galaxy? It is a group of a large number of stars, of nebula, of gases, of dust, of planets, etc. Astronomers have used special instruments to identify about 1 billion galaxies. यानी यूनिवर्स में तकरीबन 1 billion galaxies identify की गई हैं, and maybe there are more than that. Astronomers have used special instruments to identify about 1 billion galaxies. यानी कि 1 billion galaxies का मतलब है कि एक के साथ 9 zeros लगाओ, एक के साथ 3 zero लगाओ 1000 बनता है, 6 लगाओ तो million बनता है, 9 लगाओ तो billion बनता है. So about 1 billion galaxies have been identified so far. And nebula, what is a nebula? It's a cloud of gases and dust. Now this is what is a galaxy. It was about what a galaxy is. क्या होती है galaxy? Billions and billions of stars उसमें होते हैं, planets उसमें होते हैं, nebula होता है, gases होती हैं, और वो force of gravity की वजह से उसके साथ, उसके center of the gravity के साथ वो जो है attached रहते हैं. There are more than 1 billion galaxies in the universe that have been identified. Maybe there are many more which have not been identified so far, which have not come into the reach of any instrument. ये तो उन instruments जो हमने बनाए हैं उन्होंने देखा है, उससे पता चला है कि billion galaxies हैं. Maybe there are many more जो कि हमारे instruments में नहीं आती. Now what are the types of galaxies? Galaxies की कितनी किस्में होती हैं? The types of galaxies depend upon their shape, कि उसकी शक्ल कैसी है. There are many types of galaxies based on the shape. उनकी shape कैसी है, शक्ल सूरत कैसी है, उसको देख के वो astronomers बताते हैं कि इसकी ये type कौन सी है. There is one type of galaxy which is known as the spiral galaxy. वो कौन सी galaxy है? Spiral galaxy. And this galaxy has a flat disc-like shape. इसकी flat disc की तरह shape होती है, जैसे कि आपके पास एक disc है, प्लेट समझ लीजिए जिसके दरमियान से बल्ज निकला हुआ है, बिकॉज स्पाइरल गैलेक्सी के दरमियान में एक बल्ज होता है. तो इस तरह की एक जो है प्लेट लाइक चीज़ हो जिसके सेंटर में एक बल्ज हो, दैट इज़ नोन एज अ स्पाइरल गैलेक्सी, एंड इट हैज़ मेनी आर्म्स जो उसके बाहर निकलते हैं. स्पाइरल गैलेक्सी हैज़ अ फ्लैट डिस्क लाइक शेप. पहली बात इसकी याद रखने की ये है कि इसकी डिस्क की तरह की शेप होती है, डिस्क लाइक शेप विद अ बल्ज इन द सेंटर, और सेंटर से वो ऐसे बल्ज फूली होती है. स्पाइरल गैलेक्सीज may have a few or many spiral or curved arms. इसके बेशुमार स्पाइरल्स भी हो सकते हैं, बेशुमार से या कर्व्ड आर्म्स इस किस्म की शक्ल में. यानी दिस इज अ डिस्क लाइक शेप, सेंटर से बल्ज हुआ है और ऐसे फैली जा रही है. These are the arms of it or the spirals of it. Spiral कहते हैं ना जो ऐसे घूमती जाए. So what is the first type of galaxy that we are going to go through is a spiral galaxy. And what is a spiral galaxy? It has a disc like shape,
and it has a bulge in the center. It has a bulge in the center, and then it has got curved like arms or spirals going out. The second thing about the spiral galaxy is that our galaxy, the Milky Way और एंड्रोमीडा, ये स्पाइरल गैलेक्सीज है. हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, सन है और प्लैनेट्स है, ज़मीन उसमें है, वो जो हमारी गैलेक्सी है दैट इज़ नोन एज द मिल्की वे एंड इट इज़ ऑल्सो ए स्पाइरल गैलेक्सी. मिल्की वे में कंटेन 100-200 बिलियन स्टार्स. हमारी मिल्की वे में 100 से लेकर 200 अरब सितारे हो सकते हैं. It may contain 100-200 billion stars. The sun is about 30,000 light years away from the center of Milky Way. तो जो हमारा सोलर सिस्टम है ये हमारे मिल्की वे के अंदर है, हमारी गैलेक्सी के अंदर है, और सन का फासला सेंटर ऑफ द गैलेक्सी से about 30,000 light years away है. So this is what you must understand. Number one, we on the earth belong to the solar system. Our solar system is a part of the Milky Way, which is our galaxy. Our galaxy is a spiral type of galaxy. It contains stars, planets, it contains dust, gases, nebula, etc. The shape of our galaxy is disc-like with a bulge in the center and spiral arms or curved arms around it. Or which type of galaxy is? It is known as the spiral galaxy. और जो हमारी नज़दीक तरीन दूसरी गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जिसमें हमारी अर्थ मौजूद होती है, उसकी हमसायगी में जो गैलेक्सी है दैट इज़ नोन एज एंड्रोमीडा. एंड एंड्रोमीडा इज़ ऑल्सो ए स्पाइरल गैलेक्सी. The third thing to remember is that the Milky Way contains more than 100-200 billion stars and the sun is about 30,000. K का मतलब है 1000, यानी इसके साथ 3 zeros लगा लो. The sun is about 30,000 light years away from the center of Milky Way. यानी इतनी बड़ी है मिल्की वे कि जो सूरज है, जो कि हिस्सा है मिल्की वे का, वो उसके सेंटर ऑफ द मिल्की वे से कोई 30,000 लाइट ईयर्स दूर है. एंड द मिल्की वे इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2.2 मिलियन किलोमीटर्स पर आवर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर. जो हमारी मिल्की वे है ये इस स्पीड के साथ दूर जाई जा रही है, ट्रैवल कर रही है स्पेस में. द मिल्की वे इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, कितनी इसकी स्पीड है? 2.2 मिलियन किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से ये मिल्की वे जो है ये ट्रैवल कर रही है स्पेस में. एंड्रोमीडा जो है दैट इज़ अबाउट 2.25 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम द मिल्की वे. एंड्रोमीडा जो है ये हमारी हमसाये नेबरिंग गैलेक्सी है एंड दिस गैलेक्सी इज़ अबाउट 2.25 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द मिल्की वे. गोया कि मिल्की वे से भी इसका इतना फासला है जिसको 2.25 मिलियन लाइट ईयर्स है, और बट दैट इज़ द ओनली नेबरिंग galaxy that we have. This is the shape of the spiral galaxy Milky Way. It has a bulge in it. ऐसे करके अगर आप सामने से देखें तो ऐसे दरमियान से फूली हुई है और ऐसे करके ये फैली, जो कि स्टार्स उसके फैली चले जा रहे हैं. So this is about Milky Way. Now we come to the second type of galaxy which is known as the elliptical galaxy. यानी elliptical galaxy यानी बैजवी शक्ल की होती है, जैसे अंडे की शक्ल है, ओवल शेप्ड है. एलिप्टिकल गैलेक्सी, दीज आर ओवल शेप्ड गैलेक्सीज, ओवल शेप की होती हैं. दे डू नॉट रोटेट एज स्पाइरल गैलेक्सीज अराउंड देयर एक्सिस. वो अपने एक्सिस पे नहीं घूमती जिस तरह से दूसरी घूमती हैं. एक्सक्यूज मी. एक्सिस दे आर ओवल शेप्ड. They do not rotate as spiral galaxies. Spiral galaxies की तरह वो अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करती. They contain less amount of dust and gases as compared to spiral gases. And elliptical gases में जो है dust और gases थोड़े होते हैं as compared to the spiral galaxies. Trillion of stars may be present in an elliptical galaxy के अंदर trillions of stars हो सकते हैं. यानी ट्रिलियन का मतलब ये है कि आप एक के साथ
3 जीरोज लगाएं 1000, 6 लगा दें तो बनता है मिलियन, 9 लगाएं तो बिलियन, और ट्रिलियन के साथ 12 जीरोज लगाएं. सो इट मे कंटेन as much as a trillions of stars, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन स्टार्स इसमें हो सकते हैं एलिप्टिकल गैलेक्सी में. Trillions of stars may be present in an elliptical galaxy. New stars cannot be formed in an elliptical galaxy. Elliptical galaxy cannot form new stars. Why? Because they have less amount of dust and gases. Dust and gases को इकट्ठा करके तो ये stars are born. So new stars cannot be formed in an elliptical galaxy. Most of them contain old stars. Many of the galaxies that are elliptical galaxies, they have old stars. Now this is the shape of an elliptical galaxy. It is shaped like an egg. ओवल शेप में होते हैं, एलिप्स की फॉर्म होता है. इस शक्ल को हम कहते हैं एलिप्स. तो एलिप्स से लफ्ज निकला एलिप्टिकल. दिस इज एलिप्स फॉर्म. एलिप्स का मतलब की शक्ल, ऐसी शक्ल को जो अंडे की शक्ल हो, सेंटर से इसका फासला यहाँ से कम है और यहाँ से ज़्यादा है. तो इस किस्म की जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये एलिप्स की फॉर्म है. एंड द गैलेक्सी इज सिंस द गैलेक्सीज ऑफ दिस फॉर्म, देयरफॉर इट इज़ नोन एज एलिप्टिकल गैलेक्सी. एंड दीज गैलेक्सीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर वंस which are the spiral galaxies. The third type of galaxy is the irregular galaxy. Yani irregular, जैसे the name by itself says that it has got no fixed shape. ये irregular shape होती है, इसकी शक्ल जो है वो irregular सी है. They have no definite shape. कोई इसकी अब definite shape नहीं होती. The stars are not grouped in any set shape और pattern. और जो सितारे इसमें होते हैं वो किसी पैटर्न में नहीं होते, किसी शेप में नहीं होते. Just a cloud. The stars are not grouped in any set shape or pattern. They have many shapes and sizes. Irregular galaxies have got many shapes because they are irregular. They don't have a fixed shape like elliptical or like spiral. The clouds of Magellan, ये एक गैलेक्सी का नाम है. The clouds of Magellan is an irregular galaxy. It is a very small galaxy near a Milky Way. हमारी मिल्की वे के नज़दीक की गैलेक्सी, उसका नाम है मैगेलन है. And it's an irregular galaxy, but it's a very small one. These galaxies are not very common. These irregular galaxies are not very common. So they're just like that. They don't have pattern, and stars in it are just spread out in any irregular kind of a way, without any regular pattern or shape. So now I come to the activity 12.3, which is about how can you make a kind or show a galaxy. Take a paper plate, take a paper chart, take a few markers, colored markers, take a straw, water, glue, glitter pens and construction paper. Now procedure is that you draw colorful designs of stars, planets, moons and comets using colored markers on the back of paper plate. You have the paper plate, and on the back of the paper plate make use of this colored markers and draw stars, planets, moons and comets, etc. with the help of that colored markers. Use a straw, then take the straw which we have used as one of the apparatus. Take a straw to dribble a few drops of water. तो उसके ऊपर आप straw से ना थोड़ा सा चंद कतरे गिराएं, तो वो जो कतरे जो हैं they will run off and they will make a pattern on it. जैसे जैसे वो रंग उसमें घुल जाएगा तो एक पैटर्न बन जाएगा. Use a straw to dribble a few drops of water in it. The water will make color run in a lovely pattern. कट पेपर इनटू स्पायरल फॉर्म, और पेपर को स्पायरल की फॉर्म में काट लें और उस पर ग्लिटर लगा लें, तो वो दैट विल शो यू कि दिस इज़ हाउ स्पायरल गैलेक्सी इज़. ये सिर्फ बताने के लिए कि हमारी गैलेक्सी जो है स्पायरल गैलेक्सी वो कैसे होती है, और उसके लिए हमने ये एक्टिविटी की है. यू कैन फाइंड दिस एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक. इफ़ एनी ऑफ द वर्ड इज़ नॉट लेजिबल, इफ़ नॉट विजिबल टू यू, यू कैन यूज़ दैट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. यू कैन सी इट. Okay, now I recapitulate. I come over to the main points again. What is a galaxy? This is 12.2.3 topic. Talks about the galaxies. What is it? A galaxy is a very large group of stars,
नेबुला क्या होता है? नेबुला इज ऑल्सो क्लाउड ऑफ gases and dust. Gases, dust and planets. गैलेक्सी में contain billions of stars. गैलेक्सी में कई अरब सितारे होते हैं. Astronomers have used special instrument to identify about 1 billion galaxies so far. Types of galaxies. There are 3 main types. One is known as the spiral galaxy, the second is elliptical galaxy, and third is irregular shaped galaxies. A spiral galaxy is that which is a galaxy that has a flat disc-like shape with a bulge in the center. That is known as a spiral galaxy. It has its arms. The spiral galaxies may have a few or many spiral or curved arms around it. Spiral इस फॉर्म में होता है. So the first form of galaxy, कितनी types of galaxy? There are 3 types of galaxy. The first is known as the spiral galaxy. और spiral galaxy कैसी होती है? The spiral galaxy is a disc-like shape with a bulge in the center, and it has got arms of spirals around it. The second type is the Milky Way. The second point about this spiral galaxy is that our Milky Way and Andromeda, which is our neighboring galaxy, they are both spiral galaxies. याद रखने की बात है. If somebody asks you कि जो हमारी मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी जो है, कहकशान जो है, ये कौन सी टाइप ऑफ गैलेक्सी है, you will answer it is a spiral galaxy. And if somebody asks what type of galaxy is Andromeda, you will say it is also a spiral galaxy. Milky Way में contains about 200 billion stars. Milky Way में जो हमारी कहकशां हैं, जिसमें हमारी ज़मीन है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारा मून भी है, it contains about 200 billion stars. और जो सन है, सूरज जो है, is about 30,000 light years away from the center of the Milky Way. यानी हमारा planet जो है अर्थ वो और जो सोलर सिस्टम है, they are a part of the Milky Way and they are at so much distance away from the center. The Milky Way is moving with the speed of 2.2 million kilometers per hour. और मिल्की वे स्पेस में ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है कितनी स्पीड से? 2.2 मिलियन किलोमीटर्स पर आवर. एंड्रोमेडा इज अ नेबरिंग गैलेक्सी. इट इज़ अबाउट 2.25 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द मिल्की वे एंड इट इज़ अ नेबरिंग गैलेक्सी. A spiral galaxy is shaped like this. The second type of galaxy is elliptical galaxy. These are oval-shaped galaxies. They do not rotate about their axis. They contain less amount of dust and gases as compared to spiral galaxies, and trillions of stars may be present in them. New stars cannot be born in them because क्यों नहीं पैदा हो सकता नए स्टार? बिकॉज गैसेज और डस्ट इसमें नहीं है. ऐसे अगर गैसेज डस्ट नहीं तो स्टार्स नए नहीं बन सकते. स्टार्स बनते कब है? जब किसी गैलेक्सी में बेशुमार डस्ट अवेलेबल हो, उसका मैटर अवेलेबल हो, मादा हो, जिसके साथ तारा बन सकता है. न्यू स्टार्स कैनॉट बी फॉर्म इन इलिप्टिकल गैलेक्सी. मोस्ट ऑफ द स्टार्स इन द इलिप्टिकल गैलेक्सी दे आर ओल्ड स्टार्स. द थर्ड टाइप ऑफ गैलेक्सी इज irregular shaped galaxies. These irregular galaxies have no definite shape or pattern. They are not grouped in any set. The stars in it are not grouped in any pattern or shape. These irregular shaped galaxies have many kinds of shapes and sizes, and one of the galaxy which is the Magellan galaxy जो हमारी मिल्की वे के नज़दीक है is also an example of irregular galaxy. Magellan is a small galaxy. These galaxies are not very common. This type of galaxy, elliptical galaxies, are not very common. Then you have an activity 12.3. You take a paper plate and take a few colored markers and draw sun and draw stars and draw the moon and draw the planets, etc. on it, and then use a straw to drop a few drops of water in it, and the water, because the water, the color markers, the water will run over these color markers and the color will spread out, and this is, then you cut it down in the shape of the spiral, and this will give an example of what a spiral galaxy is, and our Milky Way is a spiral galaxy. Please go through it, make your points and notes. If you have difficulty, please talk to me on the cell number 0336 547 3312. Thank you.